A confrontation broke out at the Melbourne Cricket Ground MCG on December 26 during the fourth Boxing Day test between India and Australia as Khalistani supporters clashed with Indian fans. The incident escalated when Khalistani supporters, allegedly without tickets, waved flags and raised anti-India slogans. An Indian fan dismissed the protest, stating they're just a handful of people doing this nonsense agenda for themselves. Take a look. मेरे को लगता है कि उनको बिल्कुल भी लाइमलाइट नहीं देनी चाहिए। मैं पंजाब से आता हूँ और उनको कम्प्लीटली खारिज करता हूँ। Whatever they do, I think it's not worth it. Shouldn't have happened, and they're doing it behind police protection. So now it's not right at all for me. That shouldn't have happened. Coming over here and doing that kind of demonstration is not acceptable, and I'm not sure whether they have any grounds to do that, and police are protecting them and they should be just put behind bars. काफ़ी एंग्री भी हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ करती नहीं है कि ये लोग यहाँ से पासपोर्ट लेकर आ जाते हैं, मतलब इंडिया पासपोर्ट लेकर ही आते हैं ये, और ये इंडियन पासपोर्ट पे आकर यहाँ पर खालिस्तानी एजेंडा चलाते हैं। ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट की भी इसमें गलती है कि ऐसे लोग जिनका पासपोर्ट इंडियन है वो आ कैसे जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पासपोर्ट इनका इंडियन है और अपने देश के खिलाफ ही ये नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। आई एम ए प्राउड इंडियन, भले ही मैं रहता ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बट अपने आई ब्लीड इंडियन कंट्री, एंड बहुत बहुत बुरा लगा ये सोच के। और काफ़ी एंग्री भी हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ करती नहीं है कि ये लोग यहाँ से पासपोर्ट लेकर आ जाते हैं, मतलब इंडिया पासपोर्ट लेकर ही आते हैं ये, और ये इंडियन पासपोर्ट पे आकर यहाँ पर खालिस्तानी एजेंडा चलाते हैं। इनको फंडिंग मिलती है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा स्टडी भी कर रहा था, देख भी रहा था कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं, मगर ये काफ़ी बुरा। अपना भी मैं आई वांट टू से कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट की भी इसमें गलती है कि ऐसे लोग जिनका पासपोर्ट इंडियन है वो आ कैसे जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पासपोर्ट इनका इंडियन है और अपने देश के खिलाफ ही ये नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ख़राब, मेरे हिसाब से बहुत ख़राब चीज़ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप देख ही सकते हैं जैसे पुलिस भी अब आजकल काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मतलब इंडियन कम्युनिटी को। इनको पहले काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा था, इनका पहले रेफरेंडम चल रहा था बीच में, अभी यहाँ पर ये सुबह इन्होंने हल्ला करा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है। शायद आप थोड़ी देर पहले आए होते तो आप देख लेते, बहुत लंबा हंगामा हुआ है यहाँ पर। अभी पुलिस अभी इनको लेकर गई है, मगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। That's what my opinion. Shouldn't have happened, and they're doing it behind police protection. So now it's not right at all for me. That shouldn't have happened. Yeah. Respect over Indian flag. Yeah, I didn't see that, but they definitely put on Modi ji's effigies and stamped over it. Yes, they did that. It is not right, you know. He's been Prime Minister of India for 3 terms, unanimously selected. So, you know, that's not right at all by the Khalistani group. They're a terrorist organization. I don't know how they are in this country. It's totally disrespectful, and we are living in a peaceful country in Australia, and coming over here and doing that kind of demonstration is not acceptable, and I'm not sure whether they have any grounds to do that, and police are protecting them and they should be just put behind bars. And India should condemn this, and they should talk to their counterparts in Australia to make something, like, because they're doing it everywhere, like in US, in UK, in Canada, everywhere, in New Zealand. No, we totally don't accept that. Yeah. The protest happened in the morning. Yeah. By the Khalistani movement. So Yeah. what do you think? Well, it's a really seeing those people are doing such a thing, but it's not good for like anyone, or like it's not good, and we should have to respect the nation and respect what the people are doing, and obviously the Modi ji is really doing well, and when they do this thing about our national flag, it's really no good, but they should have to talk with the Department of India and with the all those people, and they should sit with them and need to sort this out, this issue. There is no point to do this issue in Australia, because obviously Australia is a completely different country. They should have to talk with all of a BJP or a Congress party, whoever they're doing. They need to sit and talk, and rather than making ourselves fool
in front of like other nation, so that's not so good as well. So सबको मिलजुल के रहना चाहिए. आज है कल है हम पता नहीं तो क्या, तो फिर इसकी वजह से हम बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करिए नेशन का, फ्लैग का, और उनको जो भी प्रॉब्लम है बातचीत से सॉल्व हो सकता है. There is no point to do like any sort of like a violent or things, and that's the reason why I would like, and it's मिलजुल के रहना चाहिए. वैसे भी like many martyrs has given their life to get the freedom in India, and now the people are doing such this kind of act which is not good for us, and like it's also like some other countries are taking advantages. अपने घर के अंदर झगड़ा चल रहा है तो दूसरी कंट्रीज उसका एडवांटेजेस ले रही है, वो भी एक अच्छा नहीं है अपने नेशन के लिए. लेकिन बट एनीवेज द लाइक पॉलिटिकल शुड हैव टू सॉर्ट दिस आउट. मॉर्निंग में कुछ सपोर्टर्स आ गए थे और प्रोटेस्ट हुआ, उसके बारे में I think I shouldn't take the name. मेरे को लगता है कि उनको बिल्कुल भी लाइमलाइट नहीं देनी चाहिए. मैं पंजाब से आता हूँ और उनको completely खारिज करता हूँ. Whatever they do, I think it's not worth it. They are just like 5 or 10 different people जो यहीं पे पले बड़े हुए हैं. They've never been to Punjab, they've never been to India, and they're just doing this nonsense agenda for themselves. So let's just not talk about it and let's just not give them any limelight. protest was being happened by the Khalistanis in front of the stadium. Would you like to comment on that? We don't know anything about it. Who's Khalistani? We don't know. I don't know who's Khalistani. I'm proud Sikh. उसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते. हालांकि हमारा एक फ्रेंड भी है, ये भी सपोर्ट नहीं करता, ये भी पंजाब से है, लेकिन इट्स जस्ट एजुकेशन का बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बीच में. एंड इट्स जस्ट नॉट अ थिंग कि तुम बाहर आके तुम ये सब कर रहे हो, इंडिया का नाम भी नीचे गिरता है. अगर आपने करना है, आप जाके इंडिया में लड़ें, जो भी आपने झगड़ा करना है. इधर रह के ये लोग उधर जा नहीं रहे, उधर जाके करें तो they'll find out. They're just trying internationally this thing, but I think this won't work. Whatever protest that is happening here, I would say they should be done in a proper way. Like if you are protesting, it should be not harmful, it should not be done in a dangerous way. And if we are protesting, it should be done in our home country. If we are fighting, we should fight in our home country. Like to all other countries outside the country, we are all Indians. So we should behave in such a way. And that's all. We have to unite in India. Whatever is happening, like in Australia, that's not good. Recently, all those incidents happened that are in Canada, like a fight between Indian community and Khalistani community, that should be stopped. We should behave in such a way. Right now, we are playing, so we are all together as an Indian. So we should behave a bit matured way. All the fight that are there, like whatever we are happening, political or religion, that should only stay in India.